अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम को आज 76 यौम जमहूरिया मुबारक हो। संडे है लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं अल-फलाह नेशनल स्कूल में ये मदारिस के बच्चों के साथ साथ तमाम दीगर कल्चरल प्रोग्राम आपके रूबरू पेश किए। खुसूसन मैं आपको बता दूं कि इस यौम जमहूरिया का जो आर्टिकल होता है उस आर्टिकल की अहमियत और अफादियत को लेकर भी तमाम बच्चों ने एक बेहतरीन मुजाहरा पेश किया है। अल-फलाह नेशनल स्कूल की जो कारकर्दगी है आपके रूबरू पेश की जाएगी। आपके रूबरू ये मदारिस के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है और दीगर बच्चों ने क्या किया है, तमाम आपके रूबरू पेश की जाएगी। कौसर न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को एक और मरतबा 76 यौम जमहूरिया दिली मुबारकबाद कबूल हो। हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें, इन बच्चों की जो काविशें हैं इसको लेकर आप शेयर करें, अपने कमेंट दें। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ के इन बच्चों के वालिदैन में भी संडे होने के बावजूद इस यौम जमहूरिया की तकरीब में बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पे जमा रहे हैं। In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. On this special occasion, let us remember the value of democracy and freedom that define our nation. Myself, Vivesha from 8th standard, is here with you all to say some powerful quotes and inspire as reflected of the strength of our republic. The word democracy comes from the Greek word demos. Demos means people and krota means power. Nelson Mandela says, the greatest glory living lies not in never falling, but in every time we fall. Democracy is like that. Abraham Lincoln defined democracy of the people, by the people, for the people. Our country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru says, democracy is not a system of government, it's a way of life. Democracy is a law of majority, it's a protection of minority. The citizens above the age 18 elect their representative alive. Democracy is art and science of running the circles from monkey cage. Thank you, Jazakallah Khairan. The Constitution. Myself, Rabia Firdaus. I am facing a problem. I want to start my business. Even I have money, but I am not sure to do so. Article 19 must be guaranteed your right to practice any profession or carry out any occupation. Hooray! Thank you for passing this Articles 19(1)(g). Now I can start any legal business I want. Explain what is an article. An article is a section clause in the Constitution of India that outlines rules, rights and guidelines. Now the next topic is what is the role of articles. Articles in the Constitution protect the rights and freedom of citizens. The next component is part. There are 22 parts are there in constitutional book, each dealing with a specific aspect of governance and citizen. To envisage a self-aware society, let us stretch the authorities right and duties as responsible citizens of India. الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके बेइंतहा खुशी का और मसरत का मैं इजहार कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अय्यूब अंसारी साहब दामद बरकातुहू और आपके बड़ी बहन साहिबा और मदरसे के दूसरे जितने भी मालिमीन हैं और असातिज़ा किराम हैं, उनकी मेहनतें, उनकी काविशें, साल में 1, 2, 3, 4 प्रोग्रामों में हम बारहा अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि बाकायदा मुस्तकिल तरक्की पर गामजन है हमारा ये मदरसा, हमारा ये इदारा। और जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को सामने रखकर दीनी और दुनियावी तालीम का ये संगम है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की बेहतरीन तालीम के लिए जो कुछ हो सकता है हज़रत भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। मेहमान भी आते रहते हैं माशाअल्लाह। आज हमारे दरमियान शेख अय्याज साहब भी तशरीफ़ फरमा है जो माशाअल्लाह सुना में अभी कि आप मुस्तकिल बड़े इसके जिम्मेदार हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा फ्यूचर है। इंशाअल्लाह ये तरक्की करेंगे, कौम मिल्लत की तरक्की होगी और मोहल्लों में सुधार आएगा।
तिजारतों में सुधार आएगा और जो कुछ भी दुनिया की ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात हैं वो सब इंशाअल्लाह पूरी होंगी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फलाह नेशनल स्कूल के अंदर और तलबा को 76वां यौम जमहूरियत के मुबारकबाद पेश करता हुआ आप सबको मेरे दिली से मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह बच्चे बहुत इतना मेहनत की टीचर्स देख के बहुत खुशी हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा भी चल रहा ऐसा कि हमारे देश के बारे में अब देश में जो हमारी कंट्री में जो चल रही वो बच्चे के दिल में बिठा हुआ हमें जैसा इल्म हासिल करना, इल्म हासिल कर वो कामयाब हो उम्मत मुस्लिमात के कौम की खिदमत जैसा करना तो बोल अभी बहुत दूर से बच्चा में तैयारी कर रहा है कि मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह मैं गुलाब को मैं इज्जत अदा कर शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, आज का ये दिन हम तमाम भारतीयों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खुशी और मसरत का दिन है कि आज का ये दिन यौम जमहूरिया कहलाता है। हमारे भारतीय होने के हिस्से से हमारे हुकूक को और हमारे कानूनी हकदारियों को हमें याद दिलाता है। ऐसे मौके पर पूरे मुल्क में तमाम बाशिंदगान हिंद, तमाम हिंदुस्तानी बाशिंदे इस खुशी की याद में यौम जमहूरिया के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर आज के इस दिन को मनाते हैं। हमारे स्कूल अल-फलाह में भी, हमारे मदरसे अल-फलाह में भी बच्चों ने, हमारी मौलिमात ने, हमारे मौलिमीन ने, मुदर्रिसीन ने बड़ी मेहनत और मशक्कत उठाकर इस खुशी में हिस्सा लिया है और बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत प्यारे अंदाज से हमारे असातिज़ा का, मौलिमीन का, मुदर्रिसीन का साथ देकर उनकी मेहनतों को चार चांद लगाते हुए अपना परफॉर्मेंस पेश किया है। हम अल-फलाह की इस मेहनत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मौलिमीन का, मुदर्रिसीन का, बच्चों का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी माएँ और उनकी बहनें और यहाँ उनके वालिदैन भी आए, शरीक रहे, अपना कीमती वक्त मुल्क की इस खुशी में लगाया। आपकी आमद पर भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का ये दिन हमको याद दिलाता है कि हमको इस मुल्क में एक कानून के तहत रहना है, हमको रहने का एक कानून दिया गया है। इस कानून के खिलाफ चलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। यह कानून कब बनाया गया, किस तरह बनाया गया, ये सब हमारे बच्चों ने इस वक्त आपके सामने पेश किया कि 1949 में नवंबर के 26 तारीख को कानून को लिया गया और इसके लिए अप्लाई करने के लिए 1950 की 26 जनवरी की आज से 76 साल पहले इसको हमारे मुल्क के कानून के तौर पर कबूल किया गया था। मेरे अजीजों, हमारे अल-फलाह के बच्चों ने जो भी प्रोग्राम पेश किया है, मैं बच्चों के इस प्रोग्राम पर अपनी खुशी का, शुक्रिया का, अल्लाह के यहाँ शुक्रिया अदा करते हुए इज़हार करता हूँ। हमारे मौलिमीन ने, मौलिमात ने बड़ी दिलचस्पी ली इन बच्चों को तैयार करने में, ये प्रोग्राम करवाने में बड़ी मेहनतें होती हैं। माँ बाप ने भी हमारा साथ दिया है, उनके साथ देने ही के नतीजे में हम आगे बढ़ते हैं। मगर एक बात याद रखिए कि ये प्रोग्राम आज का हिस्सा ही सिर्फ नहीं है। आज जो आपके बच्चे हमसे सीख रहे हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये आपके बच्चों का सरमाया है जो उनकी पूरी जिंदगी में काम आने वाला है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम में पुरजोश तरीके से बच्चों का साथ दें, आगे बढ़ाएं और जो भी मुतालबा किया जाता है ये सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। इस तरह आपके बच्चे हमेशा हर मैदान में, हर जगह पर आइंदा तरक्की करेंगे और तरक्की करके अपना मुजाहिरा पेश करेंगे। इस तरह वो दुनिया में एक इज्जतदार, पाकीज़ा इंसान बनकर, कामयाब इंसान बनकर अपनी कौम का, अपना, हमारे स्कूल का, आपका, आपके घर का, आपके खानदान का
सबका नाम रोशन करने वाले बनेंगे और इस तरह से तालीम याफ्ता बनकर इज्जतदार जिंदगी गुजारने वाले बनेंगे। इसलिए जब भी जो भी प्रोग्राम यहाँ बनाया जाता है, यह प्रोग्राम देखने के लिए, दिखाने के लिए एक दिन का प्रोग्राम है, लेकिन बच्चों की जिंदगी के लिए इंतहाई कीमती प्रोग्राम है। इसलिए आप इन प्रोग्रामों की अहमियत को जानिए। जितने वालिदैन आए उनका तो शुक्रिया, बहुत से वालिदैन नहीं आए हैं, उनको आना चाहिए ताकि उनके बच्चे उनको देखकर खुश हो और आगे बढ़े, वो तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप सिर्फ एक दिन खुश होंगे मगर बच्चों की पूरी जिंदगी इसका असर लेगी। इसलिए हम आपसे दरखास्त करते हैं, इज्तिमाअत हो या दीगर प्रोग्राम हो, आप अपने वालिदैन को लेकर आइए, अपने माँ बाप को लेकर आइए ताकि वो भी आपकी वजह से आपको देखकर खुश हो और आप भी उनकी वजह से तरक्की कर सकें। ये जरूरी है। ख्याल करेंगे, बुला लेकर आएंगे, आइंदा माँ बाप को बुला लेकर आएंगे, माँ बाप को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, सबको बुला कर आना। आते नहीं आते? आज इतवार रहने के बावजूद संडे था, फिर भी 26 जनवरी है, आप सब हिस्सा लिए। वक्त बहुत हो चुका है। मैं ऐसे मौके पर जितनी बातें आई हैं, मजीद कोई बातों की जरूरत नहीं महसूस करता और जरूरत होगी तो इंशाअल्लाह और बताया जाएगा। आप इतना टाइम दिए, माशाअल्लाह इतना वक्त दिए, मेहनत किए, इसका शुक्रिया अदा करते हुए आए हुए तमाम मेहमानों का, असातिज़ा का, बच्चों का, उनके वालिदैन का और मौलवीन का, मौलविमात का और जो भी खिदमत करने वाले हमारे आपाया हैं, खालाया हैं, उन सब का हमारे इस जलसे प्रोग्राम में और हमारी स्कूल की तरक्की में जो हिस्सा है उसका एतराफ करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Myself Bibi Amina of class 7. Respected dignitaries, teachers and my fellow friends. Today we gather to celebrate a momentous occasion in our nation history, the 26th of January, our Republic Day. On this day in 1950, India adopted its constitution, marking a significant milestone in our journey towards becoming a sovereign, socialist, secular and democratic republic. As we celebrate this day, we pay tribute to the visionaries who drafted our constitution and to the countless freedom fighters who sacrificed their lives for our independence. Our constitution is a sacred document that embodies the principles of justice, equality and liberty. It is a testament to our nation's commitment to democracy, pluralism and the well-being of all citizens. As we move forward, let us reform our pledge to uphold the value enshrined in our constitution. Let us work together to build a nation that is just, equitable and prosperous for all. Let us remember the words of our beloved leader Mahatma Gandhi, who said, "Be the change you wish to see in the world." Let us strive with that change. Let us be agent of positive transformation in our society. As we celebrate our Republic Day, let us also challenges that lie ahead. Let us resolve to work tirelessly towards overcoming and towards building a brighter future for ourselves and for generations to come. Jazakallahu khairan. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरली सदरी यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Honorable dignitaries, on this auspicious day, and our honorable secretary, because of his unavoidable circumstances, and he was not well also, and all these dignitaries and our honorable secretary spent his precious time with us for 2 hours. And on behalf of our management and my dear colleagues who participated, cooperated
and prepared well for these participants who gave a brief description about the Constitution. Every time on prayers we used to say about our preamble of our Constitution. Preamble means the first page of our Constitution. Preamble, introductory of our Constitution. As we got our independence on 1947, independence is not enough for us. Along with that, we have to enjoy our fundamental rights and fundamental duties. Without that, this is incomplete for the Indians to be an Indian citizens. First, in preamble of our Constitution, they explained about sovereign. Sovereign means purely the Indians must rule our country. No interference of any foreign country to be ruled in our country. That is the meaning of sovereign. We are independent in our thought, in planning and progress and administration. Next is democracy. That is Abraham Lincoln, the Negro, black person, President of USA, explained about the democracy of the people, by the people and for the people. That's why democracy means parliament form of government where two houses are there. Those parliament are elected by the people and those MLAs or MPs elected by the people, they look after the public. That's why it is known as democracy, people form of government. Here in democracy, people are the main center of our countries in decision making in all aspects of life. That is democracy. One more thing is that secular. Secular means independence of following any religion. Secular means following any religion. It has given the right for all the citizens. We can follow religion. We can have our masjid. We can have our madrasas. We can have our idgahs. We can have our graveyard. We can have all the work properties that we are discussing in the parliament. According to this secularism and articles, we do not in any way, we cannot give up all what we have got from our Constitution. Then socialistic. Socialistic means among the laws we should have the right to adopt our culture, our festivals, our rules, our shariat. That is socialistic. Socialistic means equal distribution of wealth and getting justice to all the citizens of our country without any color, creed or sex. Socialistic, democratic, sovereign and fundamental right, liberty of thought. We can have green thoughts and we have the free expression of speech. In the middle of the parliament also, the government has given the limit. We can enjoy our fundamental rights without any discrimination. That's the Constitution that says it is an important sacred law of our country. Being a Muslim, if we are united with each other, we can get our rights either by civil courts or by
Supreme Court is the highest court of justice, and also the Supreme Court is also, if not satisfying our fundamental rights, means we can go with the Constitution. It is the highest authority of our country, and we should have a belief, strongness, not to change our Constitution. In that Constitution, the role of Maulana Abdul Kalam is very, very important, but unluckily, according to the faith of our country, this name is not mentioning in our Constitution. By taking the laws of our Islam, where our four Khalifas, what they have introduced, in that we have included in our Constitution. This is the brief description I have given about the Constitution. Be faith and loyal and be obedient, be a good citizen, be a Muslim Ummah, and also be united to each other. Then we can enjoy our freedom also, our Republican government also. Jazakallahu khaira. You have given me the opportunity, and on behalf of my management, I extend my welcome and thankful and grateful to the delegates who spent, in spite of their scheduled time, they spent and watched our program. Once again, Jazakallahu khaira for all these delegates.